أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Lecture 7 Data Analysis for Practitioners using stata for descriptive analysis. And in this lecture, we will be also discussing how we will be constructing the variables for any of the regression analysis using primary data. Before going into the details of this lecture, हम जो है पहले पिछले लेक्चर की बात करेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने SPSS और स्टैटा के बेसिक्स यानी कि स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के ऊपर ज्यादा फोकस दिया कि हाउ एक्चुअली वी स्टार्ट with the descriptive statistics and descriptive analysis with primarily focusing on SPSS के SPSS में होता क्या है और आउटपुट क्या होती है। तो उसके बाद हमने उस लेक्चर नंबर 6 में स्टैटा के बेसिक्स को और स्टैटिस्टिक्स के बेसिक स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इन दिस लेक्चर this descriptive analysis will be more focused on stata and its output and how actually we deal with the variable over here. So moving forward, हम जब ये विंडो देखते हैं तो ये है actually data editor stata का, and in this data editor, this whole portion, the red written portion represents that variable is string, whereas this blue region, this represent that variable is represented by some numeric value, and this numeric value is actually controlling this whole description, you can say, or whole notation or whole visualization of the data in the data editor window. Now moving forward, let's say now we want कि हमारे पास कोई भी एनालिसिस आए बट वो एनालिसिस हो प्रॉपर क्रॉस टैबुलेशन की फॉर्म में और वो भी स्टैटा के अंदर। अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो वेरिएबल है, जो एमपीएस का नाम है और जो डिस्ट्रिक्ट्स है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये सारे जो हैं ये एक्चुअली इसमें हैं स्ट्रिंग में। सो व्हाट एक्चुअली वी डू बिफोर डूइंग एनी एनालिसिस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं या मिसिंग ऑप्शन, are there any errors or are there any omissions in the data? अगर it is by choice, then it should be left blank. For example, ये जो सर्वे है या ये जो डेटा है आपके पास, अब मेरे पास एमपीए है दाऊद शाह, he is from district कोहाट and he is representing constituency of PK 91। अब दाऊद शाह से पूछा गया कि उसको एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या चाहिए अपने सूबे में, सॉरी अपने डिस्ट्रिक्ट में। उसने कहा मुझे एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, इरिगेशन चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अब जो नहीं चाहिए दैट इज लेफ्ट ब्लैंक एंड जो चाहिए दैट इज बीइंग फिल्ड। सो इस केस में you need not to worry about the missing observation or missing information कि हमारे पास क्या क्या इसके अंदर मिस हुआ। लेकिन अगर ये सारे ऑप्शन रिस्पॉन्सेज मैंडेटरी होते कि नहीं सब टिक करना है, तो उस केस में फिर वी विल बी फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज और द गैप्स इन द डेटा। नाउ अब हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग में और हमें वो चाहिए आउटपुट में भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी डीस्ट्रिंग दैट वेरिएबल, हम उसको उससे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसे हटा देते हैं। So for dstring of a variable, we use this command in stata, dstring variable name comma replace, and then we encode that variable and generate another variable having numeric value at the back end. अब उसके बाद
जब हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, नाउ वी आर इन अ पोजिशन कि हमारे पास आउटपुट टेबल है. सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक फ्रीक्वेंसी टेबल. मैंने एक कमांड दी टैप Q2 num एंड Q3 num. तो मुझे स्टेटा के आउटपुट ने ये बता दिया कि जो मेंबर्स हैं, आर दे फ्रॉम इलेक्टेड, आर दे ऑन द रिजर्व सीट, आर दे ऑन माइनॉरिटी सीट, आर दे ऑन द वुमेन रिजर्व सीट, किस किस्म की सीट से हैं. तो मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 2 को जब मैंने डी स्ट्रिंग करके नम में किया तो मुझे ये वाला आउटपुट टेबल मिला. एंड दिस टाइप ऑफ टेबल will actually give me information कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक डिस्ट्रिक्ट से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. लेट्स अज्यूम कि हम ये अज्यूम करते हैं कि वहां पे इस सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 100 और 112 व्हाटसोएवर इज द नंबर, वो सारे अवेलेबल थे. तो इट विल आल्सो गिव अस द डेटा कि एबटाबाद से कितने हैं, फिर चारसद्दा से कितने हैं, डेरा इस्माइल खान से कितने हैं, दीर से कितने हैं, हरिपुर से कितने हैं, कोहाट से कितने हैं, लोअर चित्राल से कितने हैं. फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट वी वुड हैव अ नंबर के कितने रिजर्व हैं, वुमेन रिजर्व सीट्स है, कितने माइनॉरिटीज वाले हैं, कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं. So this type of frequency table helps us in getting this information. So now moving forward, अब हम करते ये हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कितने डिस्ट्रिक्ट्स ने कहा कि मुझे एजुकेशन नंबर 1 पे चाहिए. भाई सबसे पहले एजुकेशन चाहिए. कितनों ने कहा मुझे एजुकेशन दूसरे नंबर पे चाहिए, और कितनों ने कहा मुझे एजुकेशन तीसरे नंबर पे चाहिए. सो व्हाट वी डू, वी वी sort or we use a command by sort based on the education variable. by sort के बाद फिर हम कहते हैं कि हमें टेबल फॉर्म में आउटपुट मिले कि हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रैंक है. सो दिस हाउ इट विल अपीयर. ये ये अब नौ नौ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, या 1 2 3 4 5 6 7 districts say that education is their top priority. 21 member of parliament say that education is their second priority. And how many districts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 districts are there. अब यहाँ पे एक कॉमन चीज ये देखें कि सवात is also represented in number 1. Sawat is also there in number 2, and Sawat is also there in number 3. So this can happen, but हम ये नहीं कह सकते कि वो एक के अंदर होगा. लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, so in this particular case we can say that even we can have rated average 1 plus 2 plus 3, and this will become 6, and 6 divided by 3 2. So we can still say that in Sawat education gets the second highest priority. Similarly, we can do this for health. हम करते ये हैं कि हम ये कहते हैं कि बाय डिस्ट्रिक्ट मुझे ये पता चले कि हेल्थ को कौन सी प्रायोरिटी मिली और एजुकेशन को कौन सी प्रायोरिटी मिली. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये भी हम देखना चाहते हैं कि मुझे परसेंटेज भी देखनी है कि हाउ आई कैन गेट अ परसेंटेज इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स व्हाइल परफॉर्मिंग एनालिसिस इन स्टेटा. अगर मुझे चाहिए रो वाइज परसेंटेज चाहिए, तो आई एंड द कमांड विद रो इन, यानी कि टैब Q for education, Q for health, and then row. And अगर मुझे कॉलम वाइज चाहिए, then I'll go with the column.
अब रो वाइज ये रिजल्ट मुझे ये बता रहे हैं कि 50% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर सेइंग कि एजुकेशन शुड बी सेकंड प्रायोरिटी, 12.5% are saying on number 3, 37.5% are saying on number 4. यानी कि education is going in this direction and health is going in this direction. तो इस तरीके से ये हमारे पास सारे 100% बन जाते हैं. Now we move towards the graphical representation of the data analysis using. अब मेरे पास ग्राफ के लिए ये एक पर्टिकुलर कमांड है जिसकी वजह से मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो एजुकेशन है और हेल्थ है, हाउ इट इज बिहेविंग इन टर्म्स ऑफ रिस्पोंडेंट. सो after getting my output graph, I can say that health score 3 records the high. यानी कि हेल्थ का स्कोर जब 3 हो जाए तो इट रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स. ये देखिए, ये रहा हेल्थ का हाईएस्ट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट का विंडो with most regions belonging to education score 2. यानी कि and this blue represent the education. अब education यहाँ पे highest है. Health score 1 is the second largest. अब ये रहा second largest health score and is also predominantly represented by respondents with education score 2. And somehow थोड़ा बहुत portion education का भी है. अब एक ही रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि हेल्थ जो है इट इज सेवंथ, यानी कि लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड है based on his perception or based on his responses. What this figure suggests? This figure suggests variation in the distribution of education scores across health score categories. However, statistical testing is required before concluding that a significant association exists. ये ग्राफ एक्चुअली तो एसोसिएशन के लिए हम यूज करते हैं, बट हमें एक एक्सप्लोरेशन यानी एक विजुअल इंफॉर्मेशन हमें ये कंफर्म पता चल गई कि हम जो है हमें जो है हमारी कंसंट्रेशन हेल्थ की और एजुकेशन की इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी कहाँ पे है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, what next we will be discussing is the construction of variables for regression analysis. यानी अब हमारे पास क्वेश्चंस तो आ जाते हैं कि हमने उसके गेस्ट रिस्पॉन्सेस भी कलेक्ट कर लिए. कभी तो हमारे पास आ जाता है कि लिकर्ट स्केल के ऊपर सारे रिस्पॉन्सेस होंगे, कभी हमारे पास होंगे न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे, कभी हमारे पास चेकलिस्ट होंगी, कभी हमारे पास जस्ट जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, उधर से हमने सॉर्ट आउट करना है. बट हम ये करेंगे कैसे? अब एज इट इज जो रिस्पॉन्सेज हमने रिकॉर्ड कर लिया, हम उसको तो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर सकते. We can do it for descriptive analysis, we can do it for some type of qualitative analysis, but we cannot directly apply that to pure quantitative analysis, or in another word, we cannot use it directly in the regression analysis. So what we do first? सबसे पहले तो ये एक क्वेश्चन है कि which tariffs are you subject to and what is the slab? So इस क्वेश्चन को देखें तो we have 1 2 3 4 5 6 7 8 slab options are there. अब पहली चीज ये है कि मैं इसको ये कर सकता हूं कि I just number them according to their position. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5 6 and 7. But
मेरे पास यहाँ पे फिर उनके रेट्स भी गिवन हैं। तो रेट्स अब यहाँ पे जो है, since we have given particular intervals, तो अब उनमें भी हमें थोड़ा सी ये कंफ्यूजन कि अगर 1 to 5% में लेट्स से कि 4% है, तो मैं मुझे उसको भी 1 to 5 में लाना पड़ेगा। अगर वो 3.5% है तो वो भी 1 to 5 में, 1.5 है तो वो भी 1 to 5 में। So what actually I'll be doing, this is the same table or same question. So what actually I'll be doing, I will give one no duty as it will represent 0, 2 low duty, this is 1, 3 moderate, I'll scale it 2, यानी ये चीज है 1 to 5, 6 to 10, sorry, ये चीज थी। One is no duty, one is the scale, actually I give to 0, 2 जो है वो 1 to 5, 3 जो है 6 to 10, 4 जो है वो 11 to 15, 5 जो है 16 to 20, एंड मोर देन 20 को जो है वो हाईएस्ट यानी कि 6 दे दिया गया। अब मेरे पास ये सारे ऑप्शंस तो आ गए कि या तो मैं सिंगल डिजिट पे लेके जाता हूँ तो वो भी अब यहाँ से मैं कर सकता हूँ, या तो इसको मैं ये भी कर दूँ 1 + 5 6 6 / 2 3, इस तरह से भी इसको कर सकता हूँ। बट द easiest way of doing this is that 1 is ranked as 0, 1 to 5 is ranked as 2, 3 is for 6 to 10 and so on। तो ये चीज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नो ड्यूटी है, तो ये चीज आ गई 1, फेडरल एक्साइज में 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 3। अब मेरे पास ये सारे टैक्स, सारी ड्यूटीज या सारे टैक्सेस आ गए। व्हाट नेक्स्ट? अब मुझे चाहिए एक वेरिएबल कि व्हाट इज द टैरिफ ऑन लेट्स से लेदर। अब यहां से मैं करूंगा क्या? इफ आई टेक एवरेज और इफ आई टेक सम, इन जितना भी नंबर हाई होगा उतना आई कैन डिड्यूस दैट टैरिफ्स आर वेरी हाई। और उस फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि 19 है लेदर के लिए, तो स्टिल there is no custom duty, federal excise duty is 1 to 5%, then there is withholding tax 6 to 10%, and then there's GST on imports, which is very high, and GST on goods is very, again, moderate, तो ठीक है। But let's assume there's another product जिसपे सारे taxes या सारी duties greater than 20 हैं, and it sums up to 38, or its average is 5.4, or somewhere about rounding to 6। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं दिस कमोडिटी हैज हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटीज एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इनपुट या इनपुट कॉस्ट हमारे पास ज्यादा बनती है। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द वेरिएबल्स व्हाइल डूइंग बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी रिग्रेशन एनालिसिस। इस फर्दर इसमें मैं एक और भी चीज बता दूं कि हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेट्स अज्यूम कि which type of policy is affecting
the exports to some particular region, or which type of policy is hindering, or which type of policy is helping you to grow. So we have the list of policies. If there is one, then it's one. यानी कि अगर 10 policies, so we start numbering them 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then we say the 1 2 3, जितनी जितना sum या जितना weighted average ज्यादा होगा, we can say that there are X number of policies, or there are 4, or there are 5, whatsoever is the number. उतनी policies जो है वो जो है इस पूरे process को या export को या सारे system को affect कर रही हैं. And then we can further quantify our results, फिर हम further analysis करें कि how that particular policy is affecting the exports or the trade positively or negatively. या ये कि how it is contributing to the input cost. But you know, on the other side, if there is only one policy having that whole influence, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि there is one policy, it can be looked upon. लेकिन फर्दर जब उसमें जाने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि व्हाट एक्चुअली इज दैट पॉलिसी रेट, और देयर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट की ऊपर मैं बात करूँ तो होगा एक इंटरेस्ट रेट ही इफेक्ट कर रहा होगा, बट वो इंटरेस्ट रेट होगा 12 to 15% लेट से होगा दूसरी, तो दैट 12 to 15% will still bring the higher input cost, or higher cost of doing business, and it can be even higher in comparison to a commodity where all taxes are applicable, but the average is so low that it, it can be managed. So this is how we construct a variable, and this is how we try to understand, and this is how we study the variable before going into any regression analysis. That's all for this lecture. In the next lecture, we will have a data set जिसके अंदर सारी क्वांटिफिकेशन हुई होगी, एंड वी विल ट्राई टू डिसाइड कि हमें उस पर कौन सी रिग्रेशन एनालिसिस की टेक्निक लगानी है, एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल डायग्नोस्टिक्स व्हिच कैन बी रन. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर, एंड इसके बाद ये है कि हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि हाउ वी रिपोर्ट द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन अ रिपोर्ट राइटिंग फॉर्म, and how we put them in any of the research article. Thank you very much all for having time, and thank you for listening to this lecture. Allah Hafiz.